Good evening, students. शुरू करें क्या हम? Shall we start? Yes, ma'am. Okay, these are the topics that we are going to cover. Okay, out of these, we have seen introduction. Then we have seen what is data mining, right? Then we have seen what kind of data can be mined. And now today we are going to see what kind of pattern can be mined. I think we have seen one or two points from this. Further topics we are going to continue today. Okay, let us have quick revision of these topics. Do you remember we have seen why data mining? Yes, why do we need data mining? Yes, ma'am. Why do we need data mining? Ma'am, we need data mining because uh, we choose which type of data we needed and which type of data we don't needed. So we choose and we mine from it. So basically, when we ask the question why data mining, so basically data mining is used in various fields like artificial intelligence, machine learning में use होता है, वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट नहीं वेब से वेब की जो इन्फॉर्मेशन है उससे भी अगर आपको कुछ नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना है तो बेसिकली वेन एवर यू वांट टू फाइंड some useful information or the knowledge from existing data, we use data mining, right? So that is the requirement of data mining and that is called as data mining. Now after that we have seen what kind of data can be mined. Okay, do you remember what kind of data can be mined? Which types we have seen under this? Yes, ma'am. Tell. टाइम रिलेटेड डेटा और इंजीनियरिंग डिजाइन डेटा ग्राफिक्स था Okay. ग्राफ था शायद हाइपर टेक्स्ट। उसके पहले भी हमने थ्री टाइप्स की डेटा देखे थे जैसे आरडीबीएमएस देखा, जी मैम और डेटा वेयर हाउस और डेटा वेयर हाउस, ट्रांजेक्शनल डेटा very good, data और warehouse, ट्रांजेक्शनल डेटा। and then transactional data. And then we have seen other types of the data. In that we have seen time series, spatial data, geographical data, um, web data, right? So different types of data can be mined. Okay, and then we came to this point, that is what kind of pattern can be mined. Okay, so what kind of pattern can be mined means after you mine some data, what kind of patterns you will get, or you can say after data mining what output that you will get, what type of patterns you are going to get, that is nothing but the pattern that can be mined um, from the data. Okay, so let us continue with this. Last time we have seen generalization and characterization and discrimination, right? We will again go through it and then we'll continue with further patterns. Okay, so what we have seen in characterization, I gave you one example. Just say if you have a data of retail store, so finding high value customers from that retail store is nothing but the characterization, right? So basically we are summarizing the general characteristic or feature of target class, and then we are trying to find out patterns or traits or whatever essential properties you require. According to that you are trying to characterize the features, right? This is called as characterization. And then after that we have seen discrimination. So what is discrimination? Discrimination में हम क्या करते हैं? Comparison, right? So the basic purpose of discrimination is to compare the target class with
contrasting classes. So what what we are going to do, we we are going to compare high value customers with low value customer. This is called as discrimination. Any doubt in this characterization and discrimination? We have discussed this in last lecture only. No, ma'am. Okay. So for characterization, we can use these line graphs, pie chart for visualization purpose, whereas in discrimination, we can use comparison comparison chart, side by side comparison uh, chart we can use. Okay. So I have given you a very good example to understand this characterization and discrimination. So I think there is no doubt. So let us move further. The next is frequent patterns. Okay. So what is this frequent pattern is? See, mining of frequent pattern involves finding recurring patterns or repeating patterns, associations or correlations in the data set. Okay. So what type of patterns are again and again occurring in the data set that we are going to find, that we are going to mine, and is called as frequent pattern mining. Okay, so they can be classified into several types. Frequent item set. Okay, one example I have included so that it will be easy for you to understand. Okay, so basically first try to understand what is frequent pattern. Frequent pattern means in your data there are certain patterns which are occurring again and again, simply is called as frequent pattern. Okay, these frequent patterns are divided into various types. In that, very first type is frequent item set. Now, what is frequent item set? These are set of items that appear together, often in transactional data. Okay, so again you can consider data of some retail store. In that data जो कुछ भी transaction हुए हैं उस retail store में, उसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन में एक सेट ऑफ आइटम है वो अगेन एंड अगेन अपीयर हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल इन ग्रोसरी स्टोर मिल्क एंड ब्रेड आर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर. ओके, ये कैसे पता चलेगा? जब हम उस डेटा का एनालिसिस करेंगे उसके बाद हमें पता चलता है कि सम आइटम्स आर देयर विच आर frequently buy together. Got it? Is called as frequent item set. Understood? Yes. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. ये हुआ frequent item set. Then another type is frequent subsequence. Okay, so here some sequence of events are there which are occurring many times in your data set in the same order. What is frequent subsequence? Sequence that appear frequently in data showing the order of event. Okay, so let us understand this with one example. See, customer might often buy laptop first, followed by digital camera and then memory card. In the same sequence many customers are purchasing the items in some electronic store. Okay, so here when we analyzed the data we found that there is a sequence in which customers are purchasing the items frequently. So what is that sequence? Laptop, then digital camera, then memory card. Okay, so each these type of sequences are called as frequent subsequences, or they are also called as sequential patterns. Okay, one more example we can give, like on web um, many people are browsing certain pages in some order,
right? That is one more example of sequential pattern. Okay, so we can observe some specific sequence in this type of pattern. Okay, so this is one type of frequent pattern. And last is frequent substructure. Okay, so what is this substructure? See, these can be more complex structures like graphs, trees, or lattices that appear frequently. Okay, so what is name of our pattern? Frequent pattern. Okay, we are they are divided into multiple types. So in every type you will see this frequent keyword, right? But here there was a frequent item set. So two or more items in the set are getting multiple times or appear more frequently. Then in second type there was some sequential pattern which was appearing frequently. And then in last type there is a frequency of substructures. So what is this substructure? Substructures can be graphs, trees, lattices that appear frequently in the data. Okay, now, for example, you can consider in a social network, a common pattern might be that friends of friends tend to become friends. So there is a substructure. Just say if let's say on Facebook there is a person A and there is a person B. Okay, so B is a friend of A and there is one more person, let's say C. Okay, so C is a friend of B. So in this case, many times this C is tend to become friend of A. So this tendency is happening, this substructure is appearing in your data frequently is called as frequent substructures. Any doubt in this frequent pattern? No, Have ma'am. you understood this? कि क्या होता है frequent item set, frequent subsequence and frequent substructure? Yes, ma'am. Okay. Now see here one statement is there, that is this frequent pattern involve finding associations and correlations in the data. Okay, so if you see this frequent item set, it will give you association between the items. That means these two items have some association and they are appearing together in the transactional data. Or sometimes you will find correlation in the data set. Okay, so after mining the data, whatever frequent patterns you are getting, these frequent patterns are used to find association and correlation between the data set. Okay, so what is this association? We will see in further slide. Okay, so how these frequent patterns are used, one example of that is association analysis. Okay, and that we will see in further modules. We are going to see this association, correlation, frequent pattern in more detail, how to find it and how it works and all. Here just for example we will see how these frequent patterns are used in association analysis. Okay, so association analysis is one of the algorithm in data mining, and what this association analysis use is association rules. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। फ्रीक्वेंट पैटर्न है हमारे पास सबसे पहले, आफ्टर डेटा माइनिंग वी आर गेटिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। ओके, okay, let's say we have a data. On this data we have applied data mining to get frequent patterns. Okay, so on these frequent patterns further we are doing association analysis to find association between the features in the data set. ये फ्लो क्लियर है कि ये एसोसिएशन एनालिसिस कहाँ पे आता है सीक्वेंस में? Yes, ma'am. Okay. Now this association analysis uses association rules. So what is rule?
These are the rules that show how items are associated with each other in the data set. Okay, for example, let's consider one example. Okay, so this is the table this is the transaction table, right? There are 5 transactions in this table, and let's consider this is the data set of some electronic shop, because computer and software etc is there. So let's say this is the data set of electronic shop named all electronics. Okay, and this is instance of transaction table in which 5 transactions are there, and every transaction will have some list of items. गेटिंग इट? जैसे एक ट्रांजैक्शन हुआ किसी कस्टमर का, उसमें उसने परचेस किया कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड माउस। ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन किया किसी और कस्टमर ने, उसमें उसने परचेस किया कंप्यूटर, प्रिंटर एंड सॉफ्टवेयर। Likewise, in this T5 transaction fifth, that customer has purchased only computer and keyboard. Getting it? Yes. Yes, ma'am. तो ये क्या है हमारे पास? डेटा, राइट? तो ये डेटा से हमें क्या करना है? कुछ रूल्स फाइंड आउट करने हैं, राइट? So how we are going to find the rule? See, based on support and confidence, we are going to find out the rule. So for each and every item in the data set, we can find support and confidence. So how to calculate this? See, the support measures how often a rule appear in the data set. So for example, here what example we have taken? If 1% of all transaction include both computer and software, the support is 1%. Okay, so for finding this support, we need at least 2 items. One rule we need, right? So let us consider we have this rule: computer and software. So how many total transactions are there? Yes, 5. 5 transactions, right? Out of 5, how many transaction contain computer and software together? Yes, how many transaction contain computer and software together in the transaction, in these all transactions? 3, ma'am. Right, this one, then this one, and this one. Okay, so out of 5, 3 contain computer and software together. So the support for computer and software will be 3 by 5 into 100. Okay, so we are basically calculating here the percentage, right? So what we will get? 60%, right? So support for Yes. computer support for computer and software buying together is 60%. This is how we calculate support. Okay, and then how the confidence is calculated? See, this measures how often item in the rule appear together given that the first item is present. Okay, so let us understand it this with example. See, if 50% of transaction include computer, also include software, the confidence is 50%. Okay, so here while calculating confidence, we have to consider that this first item is already exist. यहाँ पे support के लिए हमने क्या किया था? We have considered total number of transaction. लेकिन confidence के लिए अभी हमें क्या consider करना है? ऐसे ही transaction जिसमें computer present हो. How many transactions are here in which computer is there? 4. 4 transactions, right? And out of 4, how many have computer with software? Again 3, right?
So confidence for computer software will be 3 divided by 4 into 100. Got it? Yes, ma'am. So this will be 75%. Okay. So now why we are calculating this support and confidence is we will decide some threshold value. जैसे कि अगर सपोर्ट के लिए हमने डिसाइड किया है थ्रेशोल्ड वैल्यू इज 60%, तो जितने भी एसोसिएशन रूल का सपोर्ट 60% से ग्रेटर है, ओनली दोज वी विल कंसिडर एज फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, या दोज पैटर्न्स वी विल कंसिडर एज इंटरेस्टिंग एंड वी विल वर्क ऑन इट. आ रहा है समझ में? कुछ लिमिट हम सेट करेंगे कि ऐसे ही आइटम्स की जिनका सपोर्ट मोर देन 60% है उन पे हम कुछ स्ट्रैटेजी लगाएंगे. जैसे कंप्यूटर के साथ सॉफ्टवेयर अगर इनका सपोर्ट है 60%, तो रिटेल स्टोर कैन या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर कैन गिव सम डिस्काउंट इफ दे बाय टुगेदर. गेटिंग इट? मैम ये रूल करेक्टराइज करने के लिए भी लगा सकते हैं क्या? ये कैरेक्टराइजेशन में पूछ रही हो क्या? जी मैम, जैसे ये रूल लगा रहे हैं, जैसे रूल भी करेक्टराइजेशन में होता है ना कि हम किस कैरेक्टराइजेशन में भी रूल होता है, लेकिन कैरेक्टराइजेशन इज डिफरेंट थिंग. वहाँ पे सपोर्ट कॉन्फिडेंस यूज नहीं होता है. वहाँ पे हम कुछ ऐसे रूल सेट करेंगे जिससे हम हाई वैल्यू कस्टमर्स को डिफाइन करेंगे. राइट? तो वो रूल कुछ भी हो सकते हैं. ओके मैम. राइट? लेकिन ये एसोसिएशन एनालिसिस में हमारे पास ये टर्म्स है सपोर्ट कॉन्फिडेंस. राइट? तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैंने अभी बताया. Now, why we are calculating this support and confidence, where it is getting used is to set the limit. Okay, तो हम कुछ तो threshold, उसको कहते हैं हम threshold, या also called as limit. We will set some limit. राइट? जैसे मैंने बताया सपोर्ट के लिए अगर हमारा थ्रेशोल्ड है 60%, तो हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन जितने भी हमारे पास ट्रांजैक्शन है उसमें से रूल एसोसिएशन रूल फॉर्म करेंगे. जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हुआ, कंप्यूटर माउस का हुआ, हर एक कॉम्बिनेशन का हम रूल फॉर्म करेंगे. राइट? हर एक रूल का हम सपोर्ट और कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करेंगे. और जिन जितने रूल का जितने रूल का सपोर्ट ग्रेटर देन 60 है और कॉन्फिडेंस के लिए भी हम कुछ सेट कर सकते हैं जैसे 70%. तो जितने रूल्स का सपोर्ट ग्रेटर देन 60 है और कॉन्फिडेंस ग्रेटर देन 70 है, ऐसे ही रूल पे हम कुछ स्ट्रैटेजी लगाएंगे. बिकॉज अगर हमने सारे ही आइटम्स के रूल बना लिए तो हमारे पास 100 मोर देन 100 या जितने भी आइटम्स है तो थाउजेंड्स ऑफ रूल्स फॉर्म होंगे. गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. हाँ. तो सारे ही आइटम्स, सारे ही रूल्स के ऊपर कुछ स्ट्रैटेजी लगा के तो फायदा नहीं होने वाला. हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग रूल्स फाइंड आउट करने हैं कि जिन पे अगर हम कुछ स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो उससे हमारा बिजनेस एनहांस हो सकता है. राइट? तो ऐसे रूल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ये सपोर्ट और कॉन्फिडेंस निकाल के कुछ थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं और जिनका वैल्यू ये थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है उस पे ही हम कुछ स्ट्रैटेजी लगाएंगे. ओके, सो दैट दे विल गिव अस सम बेनिफिट. अंडरस्टूड? जी मैम. तो ये हमने कैसे किया, यूजिंग frequent patterns. Okay, so association analysis is one task that is performed using frequent pattern. Okay. Okay, so that minimum support threshold, confidence threshold, that terms I have given here in this slide. I have already explained this. Shall I go further?
जा सकते क्या आगे? ये क्लियर है आप सबको? Yes, ma'am. Then next type of pattern that can be mined is classification. मतलब ये एक नेक्स्ट अलग टाइप का पैटर्न है जो हमें मिल सकता है आफ्टर माइनिंग. Okay, so what is classification? Classification in data mining is process where model is built to predict the category of new data point based on historical data. Okay, so this may seem bit difficult to you, heavy to you. This wording I will explain. Okay, तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? सेम वी हैव सम डेटा, राइट, और उस डेटा पे हम कुछ मॉडल बिल्ड करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा वी विल बिल्ड सम मॉडल, एंड व्हाट दैट मॉडल विल डू, that model will classify or that model will categorize your data point into some category, right? जैसे लेट्स से आपको कुछ बॉल्स दिए हैं, यू हैव बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, जैसे ग्रीन कलर के बॉल्स है आपके पास, ब्लू कलर के बॉल्स है और रेड कलर के बॉल्स है. ओके, तो ये सारे मिक्स है और आपको क्या करना है, इनको 3 अलग अलग बॉक्सेस में कैटेगराइज करना है. So you will put these green balls in green in this box. You will put all blue balls in another box, and you will put all red balls in this in another box, right? So what we are doing here, you are basically classifying the objects. Classification का मतलब समझ में आया? These balls are nothing but our data points, and we are trying to classify them into different classes: green, blue and red. This is called as classification. Okay, very raw idea of classification. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि क्लासिफिकेशन क्या है? जी मैम. हाँ, और यहाँ पे जब आप क्लासिफाई करते हो तो हियर this is the manual task and you are using your brain to classify, right? Now we have some data, okay, and we want to classify that data into different classes automatically, right? So that automatically that task can be automatically done by some model. तो ये मॉडल क्या करेगा, आपका जो भी डेटा है उसके कुछ फिक्स्ड कैटेगरीज होंगे, उसमें वो डेटा को क्लासीफाई करेगा, राइट? तो वो क्लासीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले मॉडल बिल्ड करना होता है. व्हाट इज मॉडल बिल्डिंग? यू हैव टू ट्रेन सम मॉडल. उसको पहले कुछ हिस्टोरिकल डेटा देके उसको ट्रेन करना पड़ेगा, एंड आफ्टर ट्रेनिंग दैट मॉडल इट कैन क्लासीफाई योर डेटा ऑटोमेटिकली, राइट? जैसे आप आपके ब्रेन को ट्रेन करते हो, ब्रेन जैसे आप सीख जाते हो कलर्स, और देन यू आर ट्राइंग टू क्लासीफाई देम, राइट, इनटू डिफरेंट क्लासेस. लेकिन अगर आपको ये कलर्स ही नहीं पता है, राइट, अगर आपको ये सारे बॉल्स एक ही कलर के दिख रहे हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू क्लासीफाई, राइट? जस्ट लाइक दैट, if you want to classify your data you need to train some model, right? And after training that model your data will be automatically classified by this model. Okay, so one example of classification can be emails as spam and not spam, right? आप सब जीमेल यूज करते हो? yes or no? everyone is using gmail, जी मैम. right? जीमेल में आपने देखा है कभी स्पैम फोल्डर? जी मैम. तो आपके पास इनबॉक्स होता है एंड स्पैम भी होता है, राइट? Many times your mails are automatically going into spam, right? जी मैम. How Gmail know that this is a spam email? Automatically it is doing it, right? So we you have two folders,
and every mail that you receive is getting classified into spam and no spam, राइट? जो आपके इनबॉक्स में रहते हैं दोज आर नो स्पैम ईमेल्स, एंड जो स्पैम के फोल्डर में जाते हैं दोज आर स्पैम ईमेल्स, राइट? So how Gmail is classifying this on the basis of some, there is some model which is doing this task of classifying your mails into spam and no spam, right? But how that model is doing this task? Based on previous data. That means previously कुछ तो डेटा देके उस मॉडल को ऐसे ट्रेन किया गया है कि अगर ये कीवर्ड्स है उस मेल में तो दिस इज स्पैम, जैसे कुछ ऐड है, कुछ ऑफर है, राइट? ऐसे टाइप के कुछ कीवर्ड्स हैं तो दिस इज स्पैम, राइट? और अगर ये कीवर्ड्स नहीं है तो दिस इज नो स्पैम। ऐसे उस मॉडल को पहले से ट्रेन किया गया है, राइट? एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रेनिंग इट इज classifying your emails into spam and no spam. Okay, so it is analyzing the features like keywords and links present in that email and automatically classifying your mails into spam and no spam, right? तो अगर आपके पास डेटा है और आपको क्लासिफिकेशन टाइप का टास्क परफॉर्म करना है तो यू कैन परफॉर्म this classification. This is a type of data mining process. Okay, so by classification you can classify the data into various categories. Understood? Yes, ma'am. तो जैसे अभी हमने फ्रीक्वेंट पैटर्न में देखा कि एक एसोसिएशन रूल से कैसे हम पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे ही ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो ये इसके लिए कुछ रूल्स फॉर्म होते हैं। जब भी मॉडल आपके डेटा को क्लासिफाई करता है एट दैट टाइम इट इज फॉर्मिंग सम रूल्स, और इट इज, सी दीज आर द टाइप्स. This classification can be in the form of classification rules, it can be in the form of decision tree, it can be in the form of some mathematical formula, it can be in the form of some neural network which is classifying the data. Okay, and there are multiple methods like naive bayes classification. These are algorithms which are used for classification purpose. Okay, support vector machine, k nearest neighbor, these are what? Algorithms used for classification purpose. Okay, now don't bother about these algorithms. Again, this is our first unit, right? Here my purpose is just to understand the concept of classification. Okay, we are not going to go in much detail here, because in further modules we have in detail, we are going to see in depth the concept of classification कि ये कैसे होता है, uh, how classification works, which algorithms are there, और algorithm के बारे में भी हम देखेंगे. Okay, so right now just concentrate on understanding the concept of classification कि classification में क्या होता है. Okay, data mining के बाद, डेटा माइनिंग में अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, ये सिर्फ समझ लो यहाँ पे. ठीक है, एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. ओके, सो अगेन वी विल अंडरस्टैंड विथ वन एग्जांपल. जैसे हम यहाँ पे क्या क्लासिफाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को. ठीक है, तो ये जो राइट साइड में आपको टेबल दिख रहा है, दिस इज व्हाट, आवर डेटा. ओके, सिर्फ ये लास्ट वाला कॉलम अभी के लिए भूल जाओ. दिस इज द स्टूडेंट डेटा इन विच वी हैव स्टूडेंट नेम, then we have study hours per week, like how much hours that particular student is studying per week. And lastly हमारे पास क्या है, assignment score. Okay, so instead of NA we will take some assignment score here. ठीक है, तो ये स्टूडेंट का डेटा हमारे पास है. Getting it? Now we want to categorize each student into some category. Okay, and we have three categories here: excellent, good, and needs improvement.
which three categories we have: excellent, good and needs improvement. ओके, तो ये स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास, ये इनको कहते हैं लेबल्स, दीज आर लेबल्स. ओके, so we want to build a model which will classify student into various categories. ओके, तो ये कैटेगरी हमने पहले से डिफाइन करके रखे हैं. हम मॉडल को बिल्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम डेटा जिसमें कैटेगरीज ऑलरेडी है. एंड लेट्स कंसीडर दिस इज न्यू डेटा, दीज आर 4 न्यू स्टूडेंट्स विच वी वांट टू क्लासीफाई. ओके, तो क्लासिफिकेशन में यूज कभी क्लासिफिकेशन का एक टाइप है डिसीजन ट्री. तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये है डिसीजन ट्री का. तो हाउ दैट डिसीजन ट्री इज बिल्ड. ओके, सो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा वी आर बिल्डिंग द मॉडल. और जब हमने मॉडल बिल्ड किया तो वो मॉडल बिल्ड होने के बाद हमें एक डिसीजन ट्री मिला. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिसीजन ट्री नाउ वी आर गोइंग टू कैटेगराइज स्टूडेंट इनटू वन ऑफ दिस कैटेगरी. ओके, तो ये फिर ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन ये ट्री पहले हमने हमारे पास जो पहले हिस्टोरिकल डेटा था उसके बेसिस पे ये ट्री हमने बनाया. ओके, दिस इज कॉल्ड एज मॉडल. This tree here is nothing but the model which will now automatically classify your students into one of these category. Okay, तो जैसे हमारे पास स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए का क्या है, स्टडी अवर्स पर वीक 18. ओके, तो इफ वी चेक कंडीशन हियर स्टडी अवर्स पर वीक, तो ये किस साइड में जाएगा, लेफ्ट या राइट. Here the condition is greater than 15, here the condition is less than 10, and in middle the condition is greater than 10, less than 15. तो किस साइड में जाएगा, yes, for student A number of hours per week is 18, तो ये जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट. आ रहा है समझ में. Yes. हाँ, तो कोई भी हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसके स्टडी अवर्स है 18, तो वो कैटेगराइज किया जाएगा एक्सेलेंट कैटेगरी, राइट. जैसे अगर कोई नया स्टूडेंट आया हमारे पास बी, ओके, उसके स्टडी आवर्स पर वीक है 12, राइट. तो अगर 12 है तो ये मिडल में जाएगा. तो अगर किसी के स्टडी आवर्स 10 और 15 के बीच में है तो वी आर गोइंग टू चेक वन मोर फीचर, वन मोर कंडीशन, दैट इज असाइनमेंट स्कोर. ओके, अगर स्टडी आवर्स ग्रेटर देन 15 है तो वी आर नॉट गोइंग टू चेक असाइनमेंट स्कोर. लेकिन अगर 10 और 15 के बीच में है तो वी विल चेक असाइनमेंट स्कोर एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल कैटेगराइज. ओके, तो ये असाइनमेंट स्कोर ग्रेटर देन 80 है तो इट विल गेट कैटेगराइज इनटू गुड. अगर लेस देन 80 है तो नीड्स इम्प्रूवमेंट. जैसे इसका असाइनमेंट स्कोर है 85, दैट इज व्हाई ये किस कैटेगरी में क्लासीफाई होगा, गुड. ओके, जैसे स्टूडेंट सी है हमारे पास, उसके भी स्टडी आवर्स 12 है लेकिन असाइनमेंट स्कोर है 75 विच इज लेस देन 80, सो इट विल गेट कैटेगराइज इनटू दिस नीड्स इम्प्रूवमेंट कैटेगरी. ओके, और जिसके भी स्टडी आवर्स है लेस देन 10, we are not going to check anything else. If study hours per week are less than 10, then it will go to needs improvement class. Okay, understood. Yes, ma'am. हाँ, तो जब हम डेटा माइनिंग करेंगे किसी भी डेटा पे तो ये हमारा पर्पस क्या है कि हमें ये ट्री चाहिए which will help us to take some decision. ओके, उसके बाद हमारा काम एकदम इजी हो गया. मीन्स वी डोंट हैव एनी वर्क आफ्टर दैट, बिकॉज ये सब जो होगा क्लासिफिकेशन ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा. जैसे आपके ईमेल में ऑटोमेटिकली जाता है स्पैम और नो स्पैम में, दैट इज डन ऑटोमेटिकली. लेकिन वो जो स्पैम और नो स्पैम में जाने के लिए जो कुछ मॉडल बनाया है दैट इज आवर टास्क, और दैट वी गेट आफ्टर डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, वो मॉडल मिलेगा जिससे ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन होगा. ठीक है. Okay, any doubt in classification? No, ma'am. Okay,
The next pattern that we are going to see is regression. Okay. So what is regression? It is again a data mining technique used to predict a continuous value. Okay. For regression, this is very important. It is used to predict a continuous value, or this continuous value we also call it as it is predicting you some number. ओके, जैसे क्लासिफिकेशन में हमने देखा, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन पर्पस. बट यहाँ पे हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है प्रिडिक्शन के बाद? यस, ये क्लासिफिकेशन का आउटपुट क्या है? यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम? यस, एनीवन? अगर आपको कुछ स्टूडेंट का डेटा दिया, तो उस डेटा के बेसिस पे आप क्या आउटपुट दे रहे हैं उसको? Excellent, good, needs improvement, needs improvement. Okay, this is the output you are giving. What is this? These are labels, or these are also called as classes. Okay, so classification क्या predict करता है? Labels और classes. Getting it? Okay, ma'am. हाँ, तो रिग्रेशन भी कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करेगा. रिग्रेशन इज ऑल्सो यूज टू प्रेडिक्ट समथिंग, लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लेबल्स और क्लासेस इट विल प्रेडिक्ट सम नंबर. ओके, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन इज प्रिडिक्टिंग वेदर कंडीशंस. जैसे वेदर का कुछ डेटा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेदर डेटा they predict that after 4 to 5 days rain will start, right? और after 4 to 5 days temperature will be this. ये predict करते हैं ना कि इतना टेम्परेचर होगा, इतना ह्यूमिडिटी होगा. तो ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जो प्रेडिक्ट करते हैं, दैट टास्क इज कॉल्ड एज रिग्रेशन. आया समझ में? when we predict some Yes. continuous value rather than a label. ओके, तो ये जब लेबल करते हैं प्रेडिक्ट, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन. और जब हम कुछ वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ नंबर प्रेडिक्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन. ठीक है. Yes, ma'am. नाउ ये लेबल प्रेडिक्ट करने के लिए हमने क्या बनाया? डिसीजन ट्री. वन एग्जांपल, राइट? क्लासिफिकेशन में हमने क्या बनाया? डिसीजन ट्री. वैसे ही रिग्रेशन में भी कुछ मॉडल होगा जो प्रिडिक्ट करेगा ये वैल्यू, राइट? तो ये रिग्रेशन में जो मॉडल होगा वो होगा कुछ रिग्रेशन लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन, और सम कर्व, या फिर कुछ मैथमेटिकल फंक्शन होगा जो प्रिडिक्ट करेगा या जो फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करेगा. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है या कर्व है या कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है, ये क्या है? हमारा मॉडल फॉर रिग्रेशन. ठीक है. Okay, ma'am. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास? अगेन वी हैव स्टूडेंट डेटा. ओके, तो ये है हमारा, ये हमारे टारगेट वैल्यू, और यू कैन से टारगेट फीचर. तो हम ये फाइनल ग्रेड प्रेडिक्ट कर रहे हैं. किसके बेसिस पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम फाइनल ग्रेड? ऑन व्हाट बेसिस we are predicting target final grade on the basis of attendance, right? तो ये जो लेफ्ट साइड में आप ग्राफ देख रहे हो, दिस इज द ग्राफ फॉर Attendance. अटेंडेंस वर्सेस फाइनल ग्रेड, राइट? तो ये हमारे पास डेटा है, उससे हमने ये ग्राफ प्लॉट किया. ओके, जो स्ट्रेट लाइन या कुछ कर्व लाइन होगा. ठीक है. तो ये जो कर्व लाइन है, इसका कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है, फंक्शन हम फॉर्म करेंगे. ठीक है. एंड इसके बेसिस पे अब हमें कोई भी एक न्यू डेटा आए हमारे पास, जैसे एफ एक न्यू पॉइंट है जिसका अटेंडेंस है लेट्स से 75%.
ओके, तो ये 75% के लिए हम उसका क्या क्या प्रिडिक्ट करेंगे, फाइनल ग्रेड। ओके, तो 75 पॉइंट हमारा इस लाइन पे यहाँ पे आएगा, राइट। तो इसका जो यहाँ पे फाइनल ग्रेड होगा वो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे मे बी ये होगा 72। तो अगर कोई एक नया स्टूडेंट है, कोई एक न्यू डेटा पॉइंट है जिसका अटेंडेंस है 75%, तो उसका फाइनल ग्रेड में भी हो सकता है 72% अकॉर्डिंग टू अवर मॉडल। ये क्या किया हमने, दिस इज कॉल्ड एज प्रिडिक्शन, राइट। और जब हम प्रिडिक्शन में कुछ वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन। ओके, और ये जो लाइन है ये हमें कैसे मिला, यस, फ्रॉम प्रीवियस डेटा, राइट। और ये जो लाइन फॉर्म करने के लिए हम करते हैं डेटा माइनिंग टू गेट दिस मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन हमने फॉर्म किया है, ये सिर्फ यहाँ पे 5 पॉइंट्स है इसलिए आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इन रियल लाइफ वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे रिग्रेशन फॉर्म करना या कुछ रिग्रेसर मॉडल फाइंड आउट करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट रिक्वायर्स डेटा माइनिंग। गॉट इट। Yes, ma'am. तो आज हमने क्या क्या देखा, Classification, regression, क्लासिफिकेशन, pattern, और association rules. राइट। फ्रीक्वेंट पैटर्न्स में हमने देखा एसोसिएशन रूल्स, उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन, एंड देन वी हैव सीन रिग्रेशन, राइट। तो ये सारे क्या है, दीज आर ऑल patterns, or you can say these all are tasks that you can perform using data mining। ये सब डेटा माइनिंग के अलग अलग प्रोसेस है, यू कैन से। तो अगर आपको कुछ ऐसी वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है तो आप क्या करोगे, रिग्रेशन यूज करोगे, राइट। अगर आपको कुछ लेबल प्रेडिक्ट करना है तो आप क्लासिफिकेशन यूज करोगे, अगर आपको कुछ एसोसिएशन चाहिए तो आप एसोसिएशन एनालिसिस यूज करोगे। ओके, दीज आर various techniques of data mining, and here in every example you can see we are getting some useful information from the data। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है यूजफुल इंफॉर्मेशन, Yes, ma'am. मिल रहा है ना। हमारे पास ये सिर्फ डेटा था स्टूडेंट और अटेंडेंस का, उससे हमें क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला, क्या यूजफुल नॉलेज हमने एक्सट्रैक्ट किया, दिस लाइन, right, this line is nothing but our model, and in future this line will predict final grade of any student, even if you give attendance it will predict final grade। Okay, this is very simple model, very much complex models can be formed using data mining, but understanding purpose के लिए हम ये simple examples ले रहे हैं। ओके, तो ऐसे मत समझना कि ये सिंपल, इतना सिंपल मॉडल तो हम हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज आवर डेटा इज नॉट ओनली these 5 records। रियल लाइफ में जो डेटा होता है दैट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, and from this huge amount of data finding some knowledge, finding some useful information is very complex task। Okay, but once we get that then our task become easy। Got it। Yes, ma'am. ओके, तो आज के लिए हम रुकते हैं यहाँ पे, बिकॉज आगे के भी थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है तो एक ही दिन में आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो वी विल स्टॉप फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, just wait for a second, let me take a screenshot and then you leave।
Just wait for a second. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you, ma'am.